Hello everyone, welcome to Maluka IAS. Today is the day 28 for our daily answer writing for anthropology optional, and we are doing with the unit 6.2 6.3, which is the part of the tribal India. You can see the question over the screen. What are the various methods to improve the tribal situation? इससे पहले जो हमने किया था, there were questions about the land alienation and which is called as the major cause for the tribal India. एंड नाउ जो अभी हम बेसिक पॉइंट लेकर चलने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट द ट्राइबल सिचुएशन, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्रूव द ट्राइबल सिचुएशन. आप जो ट्राइबल पीपल है, हाउ यू विल हेल्प देम टू कम आउट ऑफ द डर्थ ऑफ द लैंड एलिनिएशन, द लैंड डिस्प्लेसमेंट, द सिचुएशन ऑफ द पॉवर्टी एंड द अनएम्प्लॉयमेंट. सो द मेजर कॉज or the method for the land alienation is the absence of the proper land record, then the manipulation of the land records by the non-tribal peoples, and there are various methods like the marital alliances, like the fictitious adoption, which ultimately results into the land alienation. But now we need to see over the reform or the measures part. So उसमें जो basic आपका introduction रहेगा, it's going to be about the tribal population, and then you will switch over the body part. In the body part, it's better to define the measures into two parts. One is going to be the legislative measures, means you are making or enacting some law which are going to curtail or to control the situations of the tribal people. And another one is going to be some administrative and some social measures. Like if you are not providing them the education, if you are not making them aware, then they are not going to be the self-sufficient. And if they are not the self-sufficient, it means no anyone can come and they can grab their land. So these things can happen. So that's why the better way is to point out the measures in the form of a diagram. The first one is going to be the legislative and another one is going to be the administrative. So in the legislative, as you can see, it is the first, like you need to enact the law. Why? Because there is absence of law, and if there is no law, in that case, the non-tribal people hai, they are aware, they are educated, they know how to exploit the tribal people or how to encroach their land. So if they are going to encroach their land, तो उस केस में जो है this basic की अगर हम लो ही हम फॉर्म नहीं करेंगे, सो इन दैट केस किस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जाने वाला है. नेक्स्ट इज अबाउट द रूल्स एंड द रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल राइट्स. सो इफ वी आर फॉर्मिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, फॉर एग्जांपल यू कैन सी असम, द मेघालय, द रीजन जो बेसिकली क्या है कि जहाँ पर हमारा लाइक ट्राइबल पॉपुलेशन वो स्टे करता है, इन दोज रीजन जो है इन सब के बारे में जो है बात की जाती है. सो इन दोज रीजन इफ वी आर फॉर्मिंग और इनेक्टिंग एन लॉ, तो वो हमारे सिचुएशन को जो है सुधार सकता है, सिचुएशन को जो है इम्प्रूव कर सकता है. अनदर पॉइंट इज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर. सो इन द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज यहाँ पर तो आप लॉ बना दोगे, देन द मेजर जो प्रॉब्लम निकल कर आएगा वो देख लीजिए. वो प्रॉब्लम निकल कर आएगा दैट ईदर वी हैव द इनएडिक्वेट लीगल प्रोविजंस और we have the inadequate information, we have the inadequate information and the implementation of the law. So दोनों ही केसेस में क्या होने वाला है, दोनों ही केसेस में this will lead to the problem. उसके लिए हम क्या इंश्योर करेंगे that we need to have some administrative measures, those measures who are going to help the population and basically the tribal population. So उसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आ जाता है द एजुकेशन. Why? Because if they are aware, if they are educated, then no one can come and grab their land illegally. So उनको हम self sufficient बनाएंगे. Not only that, if they are educated, then they are not they are not dependent upon us for the like for the employment. They can grab the employment opportunities, even they can also be self-employed or they can create the employment. So उस केस में जो है education is going to be a weapon. Next is the awareness. They need to be aware of their right, like they need to be aware of the law, they need to be aware about the rules and regulations. So उसके regarding जो है वो aware होना चाहिए. Another one is to creating a kind of consciousness in between them. सो वहाँ पर हम जो है कॉन्शियसनेस क्रिएट करेंगे
उनको बताएंगे that what is right, what is wrong. Why? Because in case of the marital alliance, if they know this in the back of their mind that these non-tribal people, they are coming to us to encroach our land through the method of the marital alliance, still we are doing. So उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में हम उनमें कॉन्शियसनेस जो है क्रिएट करेंगे so that हम इस सिचुएशन को अवॉइड कर पाए. And the next point is the employment opportunity. So we are going to provide them some of the employment opportunities like the government is doing recently. Government has created a brand by the name of Tribes India. And you would found कि government campaign करवाती है, advertisement करवाती है. Tribes India means वहाँ के जो प्रोडक्ट्स है वो बनाते हैं, उनके लिए जो है अलग से उनको प्रमोट किया जाता है. तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बेसिक जो है आगे उनको प्रमोट करते हैं. सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प अस so that we can improve the tribal situation. So उनको आप उस तरीके से जो है शो करोगे. Now what you need to do is इसको आपको पूरा प्रॉपर जो है फॉर्म कर देना. डायग्राम तो आप यहाँ बीच में ऐड करोगे. अभी जो भी आपके डायग्राम मैं बताती हूँ वो डायग्राम जो है आपको अपना यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहिए, इन्फॉर्मेशन डालना चाहिए और उसके थ्रू जो आपको आगे बढ़ना चाहिए. So what are the various methods to improve the tribal situation? Introduction. Then the body part, first is going to be the legislative measures, then it's going to be the administrative, and last में आप जो है conclusion के साथ जो है इस आंसर को end कर दोगे. So the ultimate objective is to preserve the tribal land, to preserve the interest of the tribal population, and to make them feel that you are the part of the India, and आपका जो government है is a well-wisher and government is doing for you. So if ये जो मेजर्स है ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो, इनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता, ओनली देन वी कैन इंश्योर दैट का जो ट्राइबल पीपल है उनको एक एसिमिलेशन का जो है सेंस आएगा. फाइन. सो इसी के साथ हमारा ये जो है एक्सप्लेनेशन एंड हो जाता है. थैंक यू सो मच.